बोलो सद्गुरु देवनो जय। सद्गुरु अलीराम साहेबनो जय। सद्गुरु प्रेम साहेबनो जय। संत कबीर साहेब एमनी अनुभव वाणी में कह્યું છે कि सोह परोया पवन में बांध्या मेर सुमेर, ब्रह्म गांठ को हृदय धरो इस बिद माला फेर। आ संसारनी अंदर आ जीवनी मुक्ति कई रीते थाय ए माटे संत कबीर साहेब माळा फेरवानी एक रीत बतावे छे। कारण के जगतना जे मनुष्य ए माळा फेरवे छे पण ए जे माळा फेरवे छे ए संतोए ना पाड़ी छे कि माला तो मन की भली और काष्ठ का भारा, चतुर नर की एक घड़ी मूर्ख का जन्मारा। कि माला जे रही ये भीतर में मन थी फेरवानी है, हाथ में फेरवानी नहीं। एटले आपणे ए महापुरुषों ए सत्पुरुषों जे रीते परम गति ने पामी गया है અને પછી આપણને જે માર્ગદર્શન આપ્યો છે એ માર્ગદર્શન અને એ રાહ ઉપર આપણે એ ગયા છે એ રીતે આપણે જવાનું છે। એટલે મહાપુરુષોએ એ બારીક માળાને ના પાડી છે કે માલા તો કર્મે ફિરે, જીભા ફરે મુખ માહી, मनवो तेरो द्वादश फरे, ये तो समरण की गत नहीं। कि कोई पण जातनी माळा अपने हाथ में फेरवता होय तो ये माळा अपना हाथ में फरती होय अने कोई अपना इष्टदेवनु नाम अपने जीभ पर लेता होय तो ये नाम जीभ पर फरतुं होय अने मन जे आपणुं छे या जगतनी दशेय दिशा में फरतुं होय तो ये समरण नहीं, ये माळा नहीं, ये भजन नहीं अने एनाथी कोई लाभ नहीं। एवं आपड़ा महापुरुषों ने संतो कही गया है। एटले के माला तो मन की भली और काष्ठ का भारा, चतुर नर की एक घड़ी मूर्ख का जन्मारा। माला मन ने अंदर फरवी जोईए, मन बहार न फरवू जोईए। ए ज वातने संत कबीर साहेब आपने समझावे छे कि जे माला थी आपणुं कल्याण थाय छे ए कई रीते फेरवी ए वातना आपणे संतोना शब्द उपरथी संतोना वचन उपरथी समझवानुं छे। अने संतो जे रस्ते जई अने परम पदने पाम्या छे एटले ज आपणने ए रस्तो बतावी गया छे। कि शोह परोया पवन में बांध्या मेर सुमेर, ब्रह्म गांठ को हृदय धर इस्बिद माला फेर। ये माला है निज श्वास की, फेरेगा कोई दास, भव सागर भटके नहीं, कटे कर्म को फांस। कि जे माला है ये तारा निज श्वास में फरवी जोईए अने ज्यारे माला निज श्वास में फरती थई जाए छे त्यारे ज मन घरे आवतुं रहे छे, विचार करतुं बंध थई जाए छे। अने ज्यां सुधी ए माला निज श्वास में न फरे त्यां सुधी मन भटक्या करे छे। अने एटले साहेब कबीर ने कहेवुं पड़े छे कि माला है निज श्वास की,
અને ફેરેગા કોઈ દાસ આને ફેરવી શકશે, બધાયનું કામ નથી. આ માળા ફેરવી બધાયનું કામ નથી. માલા હૈ નિજ શ્વાસ કી, ફેરેગા કોઈ દાસ ફેરવશે. એ ભવસાગર ભટકે નહીં, કટે કર્મ કો ફાંસ. કે આપણે આ એક જન્મ શું, આવા કરોડો જન્મ લીધા હોય અને કરોડો જન્મના આપણા જે કર્મ હોય, પણ સદગુરુની જે નિજ શ્વાસની જે માળા છે એ જ્યારે ફરવા માંડે છે ને ત્યારે પાપ બળવા માંડે છે અને આપણે એકદમ પવિત્ર, નિર્દોષ અને શુદ્ધ જેવો આત્મા છે એવા જ આપણે બની જાવીએ છીએ. કારણ કે આપણામાં અને પરમાત્મામાં કોઈ અંતર નથી, પણ પરમાત્મા જેમ સેમ શુદ્ધ છે અને આપણે આ જગતની મલિનતાને ઓઢી છે. જો એ સંતો આપણને કહી ગયા છે પ્રમાણે આપણે એ નિજ શ્વાસની માળા ફેરવશું તો આજે આપણે સંસારની જે મલિનતા આપણે ઓઢી છે એ ધીરે 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 નષ્ટ થઈ જશે અને આપણે પણ શુદ્ધ સ્વરૂપ થઈ જઈશું. બોલો સદગુરુ દેવનો જય.